convocation open. Educational institution came into existence. One is the Central Institute of Buddhist Studies, and the other is London Model Senior Secondary School. The first is meant for traditional studies, and the second is a public school catering the needs of modern education. For formal monastic Buddhist education, as offered in Tibet, 10 major monasteries of Ladakh joined hands and on 23rd October 1959 founded the School of Buddhist Philosophy with financial support. Initially, School of Buddhist Philosophy commissioned with 2 teachers and 10 students, drawn one each from 10 major monasteries of Ladakh. 2 eminent Tibetan scholars in Buddhist philosophy, Geshe S.A. Thupstem and Geshe S.A. Thakbaz, were appointed to teach Buddhist philosophy and Bhoti language. As per the request of Padma Vibhushan His Eminence Kosuk Bokla Rinpoche, in 1962, then Prime Minister Jawaharlal Nehru directed the Ministry of Culture, Government of India to take up this institute under government patronage with full accreditation and financial support. The School of Buddhist Philosophy was registered as an educational institution in 1964 under the J.K. Society Registration Act of 1941. Later, its name was changed into Central Institute of Buddhist Studies in 1973, and it was affiliated with Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya and started offering regular formal degrees. Now, CIBS runs classes from Standard 1 to PhD at different levels. On recommendation of the University Grants Commission, on 15th January 2016, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India conferred the status of deemed to be university to CIBS Choklam. They are set out in the list and who have been examined and found qualified to the degree of Doctors of Philosophy, PhD, to which Undu Lamo, Managir, Spoken earlier by the Vice Chancellor. He mentioned in his address that today is going to be a most special day, written in golden letters in the history of Ladakh. And we all understand that how difficult the education system has been for Himalayan state. But I must compliment Honorable Prime Minister and the Government of India, including the Lieutenant Governor of Ladakh, who thought about the academic excellence which is needed by the students from Ladakh. I was sitting and chatting up with the Autonomous Hill Development Council, the Executive Councillor, Mr. Tashi Gyaltsen, and I was just talking about the logistic management. And the question was that we have 2 airports, Leh and Srinagar, for connectivity, and the helicopter service requires more people to run that service, both in terms of pilot and servicing staff. So I just thought about it, and I said, why should our students from Ladakh be not trained as pilots or in the aviation industry? And that itself will give boost to knowledge, because end of the day, why do we need universities? Why do we need schools? Why do we need colleges? The ultimate aim of education is to make a person a better human being in terms of personal goals and achievements. And the second part is become self-reliant in terms of economic needs. So once 2 purposes are met, the education is complete. And I must stop here and say all the students who passed out today, received degrees, diplomas, so on and so forth, are the ones who should think that this is not the end of their journey. Getting a degree is not the end by itself. Degree is means to an end.
And the end is both human happiness at personal level and giving happiness to society at large and serving Mother India, if I may add that. Because to serve your country, no matter what you do, be a teacher, be a musician, be an archive person, be an archaeologist, be a monk, whatever thing you choose to do in life, you be a person from army, military, police, whatever work one is doing, as long as that work is serving the humanity, you've done justice to your education. And that is the purpose. And it is for this reason that this university, today, the degree and the convocation ceremony, distribution of degrees and diplomas becomes so very relevant. Tanzim Donak. Losang Thome. Nunjuk Namgel. सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है इनका बहुत ही अहम भूमिका निभाया है और यहाँ के स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रमोशन को लेके जो है CIBS का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका रहा है और CIBS किस विषयों के साथ बनाया हम सभी जानते हैं। जिस प्रकार के सभी ने यहाँ पे कहा है कि CIBS का जो है मेन जो श्रेय जो है ये हमारे पद्म विभूषण गेल्ट्रस बकुला रिम्पोचे जी को जाता है और उनका एक लंबी सोच था इस पूरे CIBS को इस इंस्टीट्यूशन को जो है बनाने का। ये जो है पहले हम सबको पता है ये स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी करके शुरू हुआ है और धीरे धीरे जो है 1973 के आसपास जो है CIBS बना और उसके बाद जो है इसी CIBS को जो है साल 2016 में जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने का भी जो है सौभाग्य मतलब प्राप्त हुआ। तो मैं समझता हूँ किस इम्पोर्टेंट विषय के साथ इस इंस्टीट्यूट को बनाया था उसके ऊपर जो है अभी तक खड़ा उतरा है। बीच में काफ़ी सारे अप डाउन CIBS ने भी देखा है जिसके बारे में हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी ने यहाँ पे उसका जिक्र किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सभी के कलेक्टिव एफर्ट के साथ CBS को जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए था उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए जो है खासकर जो है लद्दाख को केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद से बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ जो है काम हुआ है और मुझे बड़ा खुशकिस्मती की बात है। मैं खुश किस्मत समझता हूँ और इतने कम समय में UT बनने के बाद से जो है और ख़ासकर जो है आज की इस कन्वोकेशन दिन को मैं कहता हूँ जनरली हमने देखा है बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन जो है 20-20, 30-30, 40 साल तक भी कन्वोकेशन नहीं हो पाते हैं और CIBS ने मैं समझता हूँ 2016 के बाद जो है जब से डीम्ड यूनिवर्सिटी बना है तो बहुत ही कम समय में जो है पहला कन्वोकेशन यहाँ पे हुआ है और प्रोफेसर राजेश रंजन जी ने तो मेरे ख्याल से जब से VC का पद संभाला है तो एक साल भी अभी आपका पूरा नहीं हुआ लेकिन आपने जो है इस कन्वोकेशन को पूरा कर But I am provided with this opportunity to address the convocation among the galaxy of scholars present here. I have the benefit of the educating of Buddhist philosophy in traditional monastic way. I can only assume that your decision to extend the Charmit circle by associating a Buddhist monk in current
reflects a commitment to the new mantra of Sabke Saath, Sabke Vikas, Sabke Biswas, Sabke Prayas. Who have received their degrees and medals today will be going out into the world with one of the most valued gifts, lessons of life. This is because the Central Institute of Buddhist Studies is one of the only handful of educational institutions in our country which has achieved Jimmet logo. आज हम गर्व से ये कहते हैं कि अगर आज पूरे लद्दाख में बोटी भाषा को जीवित रखने के लिए किसी ने सहयोग किया है तो इसी इंस्टीट्यूट ने दिया है। अगर हम ये कहें भी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज 100% बोटी टीचर्स जो है इसी इंस्टीट्यूट की देन है। हम कहते हैं किसी सभ्यता को अगर जीवित रखना है तो उसकी भाषा को जीवित रखना जरूरी है। इस मंच के माध्यम से आज यहाँ पर हमारे मैडम्स बैठे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारे खासकर गोम्पल स्कूल्स में जितने भी अध्यापक गण हैं उनको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है मैम। और जितना हो सके गोम्पल स्कूल्स में अभी सिर्फ शिक्षक की कमी है, इतना मैं आपको कहूँगी। और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक नियुक्त करने की ज़रूरत है और उनको समय समय पर रेगुलराइज करने की भी ज़रूरत है। जब तक हम अपने भाषा को संभालेंगे नहीं, शिक्षक को ये उम्मीद नहीं जगेंगे कि अगर हम इस लाइन में बैठेंगे तो हमारे भविष्य है, तब तक हमारा भाषा फलेंगे नहीं, फूलेंगे नहीं। मुझे याद है 80 के दशक में मैं यहाँ पर पढ़ा करती थी, यहाँ के एक छात्रा थी। उस समय इस जगह पर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. And these chants must have reverberated across our country centuries ago, because Buddhism, Lord Buddha, walked the earth and his karma bhumi was in India. And I can imagine when we got independence in 1947 and we thought what should be our national emblem, what should be our national flag. Those great minds and the founders of independent India went back to our glorious past. They went to the times of Ashoka and they picked up the 4-lion capital as our national emblem and the Dharma Chakra right in the middle of our tricolor. The first strip, the topmost saffron, of course you know it represents valor. The central one represents peace, white, and the green one represents prosperity and abundance. And in the center sits the Dharma Chakra. And Dharma Chakra is a symbol which symbolizes our commitment to the universal peace and brotherhood. So with those ideals
this country's foundation, independent country's foundation has been laid. And it's an occasion also to celebrate those great minds, those great kings who actually adopted, because Buddhism was in India, it was first oral, then the words of Buddha were reduced into writing in Sanskrit in various scriptures, but it remained in India. Tanzin Delden Hamo. बाकुला रिम्पोचे जी का जो सपना था तिब्बत चीन के अंडर चले जाने से लद्दाख से जितने भी मोनेस्टिक एजुकेशन पारंपरिक रूप से होते थे, आध्यात्मिकता, वो यहाँ से तिब्बत जाने का जो संभव नहीं रहा, उस स्थिति में लद्दाख में इस तरह के एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए भारत सरकार के आशीर्वाद से। और 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सपोर्ट से ये इंस्टीट्यूट स्पितुक मोनेस्ट्री से 2 कमरे से शुरू होकर आज 64 साल के बाद हम सब यहाँ पहुँचे हैं। इस 64 साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इस इंस्टीट्यूट ने देखा, और साथ ही साथ इस इंस्टीट्यूट ने केवल लद्दाख के समाज को नहीं बल्कि वर्ल्ड के जितने भी जो बौद्ध पारंपरिक अध्ययन को मानने वाले और खासकर विशेष रूप से 10 विद्या, 5 महाविद्या और 5 लघु विद्या को इस इंस्टीट्यूट ने इस 64 साल में 6 दशक में जो कंट्रीब्यूट किया, और उन सब के परिणाम से आज लद्दाख के इतिहास में पहला कन्वोकेशन जिसको हम सब कहते हैं, शायद इससे पहला ऑफिशियल कन्वोकेशन द ग्रेट ट्रांसलेटर लोसावर इंचन जांगपो जी के टाइम पे 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी में शायद आल्ची में हुआ होगा या ठीक से न्यारमा में हुआ होगा, लेकिन ऑफिशियली पहली बार लद्दाख के इतिहास में आज का ये कन्वोकेशन परम श्रद्धेय बाकुला रिम्पोचे जी को मैं नमन करता हूं। आज आपके ये दिन है, और कुशोक बाकुला रिम्पोचे जी के जो देखा हुआ, जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, उसी पे आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ पे पहुँचे। मैं इस अवसर पे पूरे लद्दाख के वासियों की ओर से और विशेष रूप से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के परिवार की ओर से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस कुशोक बाकुला जी के सपना को साकार करते हुए 2016 में इस इंस्टीट्यूट को डीम यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया, और उसके बाद जितना भी यहाँ अप्स एंड डाउन्स हुआ, सभी क्षण में सभी पल में हमने जितने भी प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, कभी इनकार ना करते हुए, सबको स्वीकृति देते हुए आज बहुत कम समय में हम इस मुकाम हासिल जो कर पा रहा है, मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूं। Konjong Ramdol, शुभाशिष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय है भारत भाग्य विधाता।
What do you use? What do you use? clay and cotton and Structure clay. remain as a sand, no man. So when we cover it with the jute bag and all that thing, so You pull it out. yes, ma'am. We pull it out, dig it out. the sand. Understood, understood. So first you'll make a roll with something, then over that you The put structure this. remain with the sand. Then it'll dry up and you pull that out. Yes, ma'am. Understood.